Organic chemistry. Organic chemistry is all about carbon. Carbon is actually a non-metal at the top of group 4 और कार्बन की यूनिकनेस ये है कि बहुत डिफरेंट तरीकों से बॉन्ड करता है. ठीक है, हम ऑलरेडी कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग देख चुके हैं. एक हमने डायमंड देखा था. अगर आपको याद हो तो डायमंड के अंदर हम कार्बन को कार्बन से ही बॉन्ड करते हैं और इस तरह के एक स्ट्रक्चर में बॉन्ड करते हैं और हमने उसे टेट्राहेड्रल कहा था इस स्ट्रक्चर को. दैट वाज बैक इन चैप्टर नंबर 3. सेकेंड फॉर्म जो हमने डिस्कस की थी वो ग्रेफाइट थी. ग्रेफाइट ये था कार्बन जो था वो कार्बन के साथ ही हेक्सागॉन्स बनाता था. ठीक है, इस तरह के मींस एवरी corner of a hexagon, as hexagon has 6 corners, was covered with a carbon atom. और वो हेक्सागन एक लेयर्ड फॉर्म में एक और हेक्सागन के साथ लेयर्स की फॉर्म में अटैच होते थे. ठीक है, और वो भी सेपरेटली वीक बॉन्डिंग से. ठीक है, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के लिए पढ़ चुके हैं. हम इसे लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर इंतहाई डिफरेंट हैं. एक थर्ड फॉर्म फुलरीन्स एग्जिस्ट करती है जिसे हम कार्बन नैनो ट्यूब्स भी कहते हैं. इसे हमने रिसेंटली डिस्कवर किया. बाय रिसेंट वी मीन इट्स बीन अ कपल ऑफ डेकेड्स. ठीक है, और इसकी एक्सप्लॉयटेशन खास तौर पे नैनो टेक्नोलॉजी में हो रही है. एज द वर्ड नैनो सजेस्ट्स, दिस इज 10 raised to power -9 meters in size, जो कि एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर बनता है. नैनो वर्ड आपने फिजिक्स में इंतहाई छोटे स्ट्रक्चर के लिए पढ़ा होगा. फिर हम इसके ऊपर हायर माइक्रोस्कोप्स, बेटर माइक्रोस्कोप्स यूज करें, स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप जैसी, ताकि हम एटॉमिक लेवल के ऊपर इसके इमेजेस प्रोड्यूस कर सकें या एटॉमिक लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें. एंड द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच वी कॉल इट नैनो टेक्नोलॉजी. ठीक है, नैनो स्टैंड्स टू 10 raised to power -9 meters. ठीक है, इट्स जस्ट you can say an introduction. Actually नैनो टेक्नोलॉजी या फुलरीन्स ए लेवल्स में एग्जिस्ट करती हैं, तो सिर्फ इसलिए कि ए लेवल्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ना हो, हमने उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे डाला हुआ है. जितना कुछ मैंने भी पढ़ाया है अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, क्योंकि वो थर्ड चैप्टर का हिस्सा थे, इसमें से कोई भी चीज पास्ट पेपर्स में नहीं आती है. इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन. एवर नैनो टेक्नोलॉजी का वर्ड या उससे रिलेटेड टर्म्स इन्होंने पास्ट पेपर्स में यूज किए हुए हैं, बट नेवर एज अ क्वेश्चन, ऑलवेज एज एन आंसर. ठीक है, इसमें जो एक चीज मैं बच्चों को मेमोराइज करने के लिए कहता हूँ वो ये बॉटम पर इमेज है कार्बन 60. फुलरीन का फॉर्मूला C60 होता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ये भी पास्ट पेपर्स में पहले आया हुआ है, बट नॉट एज क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. इट वाज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट. इफ यू आर फेमिलियर विद इट, इट्स इजियर फॉर यू टू आंसर दोस क्वेश्चंस. ऑलराइट, और चूंकि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं तो आपको हेक्सागॉन्स या पेंटागॉन्स इसके अंदर नजर आएंगे. Every red ball is depicting a carbon atom, and you would see that the carbon atoms are the corners, 6 corners of a hexagon or 5 corners of a pentagon, respectively, which depicts how good is carbon with covalent bonding, which actually brings us to our next topic. कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, इसमें से कुछ कंपाउंड्स हम शुरू में एक्सक्लूड कर देते हैं और उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तौर पे नहीं स्टडी करेंगे. एक्सक्लूजन्स में मैं स्पेसिफिकली 4 चीजों को डिस्कस करता हूँ जो हमारी बुक का सिलेबस डॉक्यूमेंट का एक्सक्लूजन है. Carbon dioxide will not be considered as an organic compound. We are familiar with this gas already. Carbon monoxide is not going to be considered as an organic compound. We are also familiar with this gas. It's a toxic gas for human beings. Carbonate ions will not be considered as a part of organic chemistry, though they contain carbon atoms. And hydrogen carbonate ions, or we also call them bicarbonate ions, are not considered as a part of organic chemistry at this level. ठीक है, ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, लेकिन हम इन्हें ऑर्गेनिक पार्ट कंसिडर करके नहीं स्टडी कर रहे होंगे. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मोस्टली कार्बन एटम्स होंगे विद 3 स्पेशल फीचर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग. व्हाट आर दोस? लेट्स कम टू दैट. दोस 3 फीचर्स आर, नंबर 1, कार्बन एटम्स ज्वाइन करेंगे लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में. ठीक है, और दूसरे एलिमेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं. द एलिमेंट्स दैट आर टॉप ऑफ द लिस्ट आर हाइड्रोजन or oxygen or nitrogen, maybe at some points phosphorus and sulfur as well, but phosphorus and sulfur are only told as a part of this chemistry's branch, but are not a part of O levels at least.
but keep them in mind because they are going to be taught to you at senior levels like A levels. All right. However, hydrogen, oxygen, and nitrogen are commonly going to be a part of organic compounds. Next up is the second important property or feature is carbon atoms can be chained in links with single bonds, which are usually depicted with a single line, double bonds, which are depicted with a double line, or triple bonds, which are depicted with a triple line. Remember, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है पर एटम, और ये जो है ये तीन इलेक्ट्रॉन्स पर एटम शेयर हो रहे होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये तीनों तरह के बॉन्ड्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। कार्बन की खास बात ये होगी जो हमने इससे पहले नहीं बताई कि वो अपने आप को रिंग्स में अरेंज करेगा। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स ग्रेफाइट के तो डिस्कस हुए हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी रिंग्स इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे जिसमें कार्बन 6 कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागोन या पेंटागॉन्स और अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल, हम इन्हें सिंपली रिंग्स कह देते हैं, उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और इससे हम बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। उसमें एक बहुत अच्छी आसान एग्जांपल जो हम दे सकते हैं वो हम डीएनए की देते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जाइगेंटिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आप नोटिस कर सकते हैं कि a number of different kinds of covalent bonds, single or double, are present in this structure. ठीक है, और अगर कोई बायो पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसे अंदाजा होता है कि ये ए टी सी जी क्या चीजें। बहरहाल at this level you don't need to know them, it's just a diagram for you showing you the complex model of how carbon-based structures get composed of a huge number of covalent bonds. For some more examples, carbon 4 bonds बनाता है। That is because के carbon 4th ग्रुप में है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं outermost शेल में जो कि शेयरिंग में जा सकते हैं, hence 4 bonds. उसकी वजह से हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, या उसकी वजह से इथेन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ये जिस तरह ये आपके सामने C8H18 का स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये भी एग्जिस्ट करता है। हर एक स्टिक एक हाइड्रोजन को डिपिक्ट करिए यहाँ पर जो इसके आगे कनेक्टेड है, वो स्ट्रक्चर में तो नहीं शो किया गया वॉलेंट स्टिक मॉडल में, लेकिन नीचे फॉर्मूलास की फॉर्म में मैंने लिख दिया। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास और एटम्स भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन अगर स्ट्रक्चर के अंदर व्हाइट बॉल के तौर पे शो किया जाए तो ये C3H8 का स्ट्रक्चर है, या फिर ये हमारे पास C3H7OH भी हो सकता है। ये एक अल्कोहल बेस्ड स्ट्रक्चर है, रेड बॉल डिपिक्ट कर रही है ऑक्सीजन को, व्हाइट बॉल डिपिक्ट कर रही है हाइड्रोजन को, और ब्लैक बॉल डिपिक्ट कर रही है कार्बन को। These colors are going to be like that. These are universal colors for depiction for ball and stick models, और ये हमेशा हर मॉडल में पूरे इस चैप्टर में, चैप्टर 11 में भी सिमिलर रहेंगे। इसमें डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड्स उसने आपको इस तरह से ऊपर और नीचे शो किए हुए हैं। दिस इज द सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 में डबल बॉन्ड की एग्जांपल्स और बॉल एंड स्टिक डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स में पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दिस इज C6H12O6 जो कि अपनी कॉम्प्लिकेशन में प्रॉपर्ली शो किया हुआ है। इट हैज अ लॉट ऑफ सिंगल बॉन्ड्स and there can be something even bigger than that which can contain multiple chains. These are long chain fat molecules with a number of carbon, hydrogen and oxygen atoms, as you can see over here. ठीक है, तो हमारे पास कार्बन इस तरह की बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से ऑर्गेनिक बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा एक बड़ा सब सब्जेक्ट या सब लाइन निकाल सकता है। Before we move any further, we need to explain what hydrocarbons are. हाइड्रोकार्बन्स बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट हाइड्रोकार्बन्स है। एज द नेम सजेस्ट, इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा और कोई और थर्ड एलिमेंट नहीं होगा। सो इट्स प्रीटी इजी। अगर कोई फॉर्मूला है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल्स में भी कोट किए हैं, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, बिकॉज द फॉर्मूला ओनली कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन and hydrogen. Okay, hydrocarbons में आगे further हम 3 types बनाते हैं and it's going to be pretty easy. ठीक है, जिस तरह मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ, हमारे पास सिंगल बॉन्ड बेस्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं, डबल बॉन्ड बेस्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बेस्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं। अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बेस पर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, हम उन्हें अल्केन्स बुलाएंगे, ठीक है, which we are going to define next. अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी पूरे स्ट्रक्चर में एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हम उन्हें अल्कीन्स बुलाएंगे, which are going to come after alkanes of course. अगर पूरे स्ट्रक्चर में एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिर्फ याद रखिए कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल और डबल बॉन्ड देखते हैं, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं,
तो उसे हम अल्काइंस बुलाएंगे, जो कि अल्केन्स और अल्कीन्स के बाद हमने स्टडी करना है। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ड स्ट्रक्चर होंगे। नाउ हाउ टू स्टार्ट विद अल्केन्स एंड हाउ टू डिफाइन देम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बहुत बड़ी काउंट एग्जिस्ट करती है, अबाउट 6 मिलियन कंपाउंड्स। उसमें से हमने अल्केन्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिमेंबर, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए हम जो टाइप यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसके लिए जो हम टाइप यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके लिए वर्ड सैचुरेटेड इसलिए यूज किया जाता है, वैसे तो सैचुरेटेड हमने इससे पहले सॉल्यूशंस में यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जितने भी इसके आगे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं, सिंगल बॉन्ड्स, वो सब हाइड्रोजन से कवर अप हो जाते हैं। Why we call them unsaturated? Because सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स नहीं होते, कुछ डबल और ट्रिपल होते हैं। The number of hydrogen atoms of course decrease कर जाते हैं alkenes और alkynes में। We're going to call them unsaturated. उसमें ज्यादा हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब यह है कि इसमें जिस तरह से हम सॉल्यूशन की बात करते थे, सैचुरेटेड का मतलब होता था इसमें कोई और हाइड्रोजन नहीं ऐड हो सकता। हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो भी it has the maximum number of hydrogen atoms, so you won't be able to add any more. So alkenes सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टाइप है। मॉलिक्यूल्स इस कंपाउंड के कंसिस्ट करते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता पूरे स्ट्रक्चर या चेन में। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 होता है, which is pretty easy to understand कि हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे। n को 1 पुट करें तो एक मॉलिक्यूल बनता है, 2 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे और, and this general formula tells us that we can make thousands or millions of different molecules from this. तो ये पहली जगह है जहां पर हम जनरल फार्मूला शो कर रहे हैं किसी भी एक पूरी फैमिली को डिपिक्ट करने के लिए। रिमेंबर, अल्केन इज अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल कंपाउंड। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स अल्केन्स होते हैं जो इस फार्मूला के अंदर फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम n को 1 रखेंगे तो फार्मूला CH4 बन जाएगा, n को 2 रखेंगे फार्मूला C2H6 बन जाएगा, n को 3 रखेंगे ऑफ कोर्स C के नीचे वो 3 आया, और H क्या है, 2n+2, 3 2s 6 plus 2 8, so H 8 हो जाएगा। That's how this 2n+2 works. तो इस तरह से अल्केन्स का फॉर्मूला किसी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ जो आपको दिया जाए, आप ऑफ कोर्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टेल मी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉर दिस वन, C14. C14, H18, I mean 16. 2n. First multiply it by 2, then add 2. This is, maybe the writing font smaller over there, this is 2n+2. So you first multiply the number of carbon atoms with 2 and then you add 2. H30. Right. C14, H30. इस तरह आप किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। You can calculate this one, you can calculate for any random number of carbon atoms given to you as a compound. किसी भी अल्केन का फॉर्मूला निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। So, taking a look at it, on the next page we have a big table that tells us about different number of carbon atoms. Take a look. आपके पास अगर number of carbon atoms 1 है CH4, 2 है C2H6, 3 है C3H8 and the list goes on. आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं कि आपको एक जनरल फॉर्मूला पता है। There are some names attached to it. Naming हम थोड़ा सा ठहर के करते हैं। However, ये याद रखिएगा कि prefixes exist करती हैं naming में। Meth stands for 1 carbon atom, eth stands for 2 carbon atom, prop stands for 3 carbon atoms, but stands for 4, pent stands for 5, and hex stands for 6 carbon atoms. So ये prefixes हैं जो नाम के exist करते हैं। Alkane चूंकि ane पर end होते हैं, so we have the suffix ane ahead of this name. थोड़ा सा मैंने आपको style of naming बताया। It's not the complete nomenclature that we need for this chapter, but at least this is the starting one. यहाँ से आपको इतनी समझ जरूर आ सकती है कि number of carbon atoms के हिसाब से prefix या suffix क्या होगी। Now, as you can see the boiling points increasing down the series, it's not just the boiling point. In most of the cases, the melting point also increases down the series and the density also increases down the series. If we keep going on, the viscosity also increases down the series. However, the flammability, these all increase down the series.
flammability is somewhat different. The flammability is going to decrease down the series. ये वो वाहिद parameter है जो decrease करता है. Let's explain. Melting boiling point के लिए आप familiar हैं, density के लिए भी familiar हैं. Viscosity is the resistance to its own flow. Higher the viscosity, difficult it is for the liquid to move. For example, आपने comparison देखा होगा water का और honey का, ठीक है? हम कहते हैं कि honey जो है वो water जो है वो less viscous है और honey जो है वो more viscous है. इसी वजह से glass of water उल्टा करेंगे, in a fraction of a second that water would be all over the floor. Honey को उल्टा कर दें jar को, you'll have to wait for the honey to drop on the floor. Literally इंतजार करना पड़ता है कि honey जो है वो तशरीफ लाए बाकायदा नीचे, and it would move very slowly. You can even count the time. You can even count the number of seconds for the honey to drop on the floor. ठीक है? So that's because of viscosity, resistance to its own flow. Remember, as the chain length increases, more number of atoms are added to the molecule, the viscosity also increases. Flammability is how easily it catches fire. As the chain length increases, it's difficult to catch fire. So the most flammable would be methane, and hence we use it a lot as a fuel. Remember, all of them are fuel. Their physical states at room temperature changes. The first four are gases, up next are liquids, then are solids. For this, I would rather read the last line right on top of this table. Under normal conditions, room temperature, the first four members of the families are gases. C5 से C16 के दरमियान हमारे पास liquids हैं. C17 से हमारे पास waxy solids शुरू होते हैं और तकरीबन C26 या 25 के बाद जाकर हमारे पास hard solids शुरू होते हैं. I hope you understand waxy solids are more like wax. With a little bit of temperature, then they can be softened. However, hard solids are the one which cannot be softened with temperature. Okay? Choline is a good example of a hard solid alkane. Okay? So on this page, there are other things they're going to discuss about alkanes. First thing is this big portion which discusses different kinds of formula. So in order to do that, I'm going to discuss different kinds of formulas that we commonly use in organic chemistry. Okay, so there are 5 different kinds of formulae that we need to go with in this chapter. And on the same page, we have the information about them. Let's go through them. Molecular formula is actually all about actual number of atoms present in the molecule. For example, ethane. It actually tells us that there are 2 more atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen in one molecule of ethane. The other type would be empirical. This is the simplest whole number ratio. For example, in ethane, the C2H6 formula can be converted into CH3 because that's the simplest whole number ratio. For example, let's take another example. We have glucose with the actual formula as C6H12O6, and it would become CH2O, right? Yes, sir. That's the empirical formula because that's the simplest whole number ratio. Remember, when I use the word simplest, that means you need to go with the smallest possible numbers that you can. For example, this formula can also be converted into C3H6O3 or maybe C2H4O2, but the simplest whole number ratio would be neither one of these, and in fact this, right? So try to go with the smallest possible numbers. Any other set of numbers may be true, maybe a similar ratio, but that's not the simplest whole number ratio. So that won't be correct, that won't be correct. This would be the only correct empirical formula for that one. Next up are structural formula. If the structural formula had the words displayed, it means that you need to show all the atoms in all the bonds. This one in specific is all the atoms and all the bonds. The common words which are a part of past paper now. That means you need to show all the atoms and all the bonds. Like this one has a carbon-carbon single bond, and this one has 6 carbon-hydrogen single bonds. However, this formula can be contracted or condensed into this kind of structure, in which you only show carbon-carbon bonds
You show carbon-carbon bonds, but you never show any carbon-hydrogen bonds. My bad. This was supposed to be H. You are never supposed to show any carbon-hydrogen bond is the condensed formula. Condensed one also works in the papers and is considered correct until unless this statement has been written or this word has been used in exams. If they have used the words of all the atoms and all the bonds in the question or displayed formula, then you are supposed to use this and not this. Next up is dot and cross formula. Dot and cross formula is something that we are familiar from chapter number 3. Every covalent bond is shown with a dot and a cross. Dot from one atom and cross for the other. However, the last kind is the general formula. For example, for alkanes, that is CnH2n plus 2. For alkenes, that is different than alkanes. For example, on upcoming pages, we'll talk about alkenes, which is CnH2n, which means it always will have different number of hydrogen atoms than alkanes. And finally, for alkynes, the general formula would be CnH2n minus 2, which means the number of hydrogen atoms would always be different for the same number of carbon atoms in alkanes, alkenes, and alkynes. A general formula represents an entire family in organic chemistry because every member of the family can always be calculated by a simplest formula. The one we just worked for alkanes. So these are the 5 possible types of formulas that are included in exams, and you must be familiar with their names. So whichever type of formula he asks you to write, you always go for that one. Any questions from this part? No, sir. All right, well, let's stop sharing and let's get back to the book. So all of these types are also given in the same part of the book. This pink portion, they talk about empirical, molecular, and structural formula. Apart from this, there is one more important piece of information that is present on this page. And this one is actually a boundary line case. When we talk about intermolecular forces for covalent bonding, remember the name we are supposed to quote in exams is van der Waals forces. Van der Waals is the name of scientist, and it's written in the same way, small v, small d, with capital W, and apostrophe after the name, after the S letter in the name. It's written exactly the similar way in exams. If you change the name anyhow, it would be a wrong name and they might cut a mark for it. So make sure you remember the same name. It's the type of intermolecular forces, weak forces between the molecules. And because of these weak forces, they would affect the melting point and the boiling point of a substance. Stronger the forces, higher the melting and boiling points, like written over here, and weaker these forces, lower would be the melting or boiling points of a specific organic substance. In this case, hydrocarbons, specifically alkanes. Are we good? Yes, sir. Moving on. You would find a similar set of examples on the next page. You would see they're completely displayed formulas of the first 6 alkanes, as well as the ball and stick models for methane, ethane, propane, butane, pentane, and hexane. You would see that every time at every step, a carbon and 2 hydrogen atoms are added to the structure. Take a look. This one has the formula of CH4. This one has the formula of C2H6, which means 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms were just added to it. This one is C3H8, which means 2 sets of carbon and hydrogen atoms were added to it. This keeps on increasing the chain length. In hexane, the formula becomes C6H14. Hence, the number of the chain is longer, the number of carbon and hydrogen atoms are more, which automatically would increase the melting point, the boiling point,
the density and the viscosity of this substance, all more than the previous 5 compounds. But of course, it would have a lower flammability. It would be difficult to burn hexane than it is to pentane, butane, propane, ethane, or methane. Let me tell you, methane burns easiest in all of these 6 components. So moving on, this gives you a pretty good idea how the chain length increases as we add numbers to it. Up next is chemical reactions. Let's talk about a couple of chemical reactions of alkanes. In this case, we start off with burning of alkanes. Burning is actually an exothermic reaction. All alkanes make good fuels. Their availability and cost can have a very strong effect on the economies, or vice versa. Economies can have a very strong effect on the availability and cost of these fuels. And when they burn in a good supply of air, the products are carbon dioxide and water vapors. So no matter which alkane you pick, the products are always going to be the same in the good supply of air. This one is commonly known as complete combustion. Now, in this case, the working in the previous papers is pretty easy. They will come up with a different alkane, and you are supposed to complete the equation and balance it. Let's say they talk about C4H10. What you're supposed to do is to react it with oxygen, produce carbon dioxide and water. That's how always the equation of good supply of air or complete combustion would work. Now, you're supposed to balance the equation. Remember the rules. Carbon is to be balanced in first, hydrogen at second, and for this specific equation, oxygen to be balanced in the end. Why are we doing something like that? Remember, the rules were to keep hydrogen and oxygen for the end, which automatically brings carbon as first. The other set of rules was, if there is a species that is present in a single substance on the left-hand side, but is a part of both or two or three substances on the right-hand side, that is supposed to be balanced last. As oxygen is only present in oxygen gas on the left, but oxygen is a part of both carbon dioxide and water on the right-hand side, it has to be balanced at the end, which makes hydrogen to be balanced after carbon but before oxygen. So carbon first, hydrogen after, and oxygen at the end. Starting with this, we have 4 carbon atoms over here, so we simply write 4 over here. We have 10 hydrogen atoms over here, but as we have 2, if we multiply this 2 by 5, we have 2 into 5, 10. So 10 hydrogen atom on the left, 10 on the right. We are done balancing carbon as well as hydrogen. They were pretty easy. Now the only thing left is oxygen. So we have 8 oxygen atoms over here and 5 over here, which makes a total of 13. So either we can write 6.5 over here, or we can multiply the entire equation by 2 and get our answer like this: 2C4H10 instead of 1. Then 6.5 into 2 would be 13O2. Then 4 into 2 would be 8 CO2. And then 5 into 2 would be 10 H2O. You can write both of these equations as correct ones. This is a whole number equation and does not use any decimal. This is an equation which uses a decimal 6.5 over here. So both of them are considered correct one in exams. But remember, if you're supposed to use a decimal, only 0.5s are allowed. No 0.3s, 4s, 0.27, 0.91, 0.80. These are not allowed. You can only use 0.5s for balancing of equations in terms of decimal chemical equations. Are we good? Yes, sir. Okay. We're good. Let's practice another equation. So, methane forms a natural part and a major one of natural gas. Propane and butane burn with very hot flames and they are sold as LPG, liquefied petroleum gas. They are kept as liquids under pressure. They vaporize very easily whenever that pressure is released. And they are commonly used in tanks or cylinders.
Common cylinders of butane gas are used as portable gas fires at home. Butane is used in camping stoves, blow torches, and gas lighters. These are the uses of the first four alkanes. They have been a part of past papers, but they are somewhat rare now because these are considered too easy of questions. Which brings us to our next part, homologous series. An entire family of organic compounds, such as alkanes, have a similar set of chemical properties, because of which we call it a homologous series. A homologous series actually depicts an entire family of organic compounds that have four characteristics. First, they have the same general formula. Secondly, they have similar chemical properties, similar, not exactly same, similar, which means all the alkanes will completely burn in the presence of good amount of oxygen to give us carbon dioxide and water. So they have similar chemical properties, but they might not all give the same set of products. That may change from carbon dioxide, one. Two, that they might not use the same amount of oxygen. So the chemical properties are somewhat similar, but not completely or exactly the same. Just like that, if we talk about the third point, they show a gradual increase in physical properties, such as melting point, boiling point, density, the list goes on. However, there is a point missing over here, and I always ask my students to add it. They have the same functional group. Now, what sort of functional group is? We are going to define a little later as soon as we're going to done with at least one page of alkenes. So I'm going to keep this for now, and I'm going to discuss that after this one page. All right. Okay, sir. So let's clear it up. Let's move on. Next on this page, we have alkenes.